Yeah, good morning, everyone. Okay, so let's start. तो हमारा question number 5 रू करिवार थिला. Okay. So question number 5, examine the importance of directive principle of state policy and the steps taken by the government to implement them. तो आप रे में कौन-कौन points रहेगा? First few minutes हम discussion करिवा तापरे कौन-कौन point रहेगा भाई? We can make it more easier also. Priyanka, go. First होची सर intro रहिबो. The sources of the concept of DPSP is the Spanish Constitution of which enshrined in the part 4 Article 36 to 51 of the Indian Constitution. तापरे सर रहिबो importance रहिबो तारो importance of DPSP रहिछि हमरो socio economic rights रे रहिछि ना fundamental rights provides the political rights and DPSP supplement them by socio economic rights. Then sustainable development रे रहिछि DPSP are the important to create a balance between economic progress and the competition and on one head and also environmental sustainability. Then environment kshetra re rohichi DPSP ର importance rohichi. It oblige the government to protect and improve the environment. And then human capital kshetra re rohichi. DPSP puts on obligation on the part of the government to provide free compulsory quality education up to the primary level. Then women rights kshetra re rohichi. DPSP put on the state work towards women education, equal opportunity and uniform civil code. एतिक रहिछि. तापरे सर इम्प्लीमेंटेशन को क्षेत्र रे हेछि सेटा गवर्नमेंट द्वारा DPSP रो सेटा लेखा हबो. सेटा हबो हमरो लैंड रिफॉर्म क्षेत्र रे हेछि abolition of intermediaries like जमीदार्स जागीरदार्स सेगुडा रहबो. तापरे tenancy reforms like security of the tenant and fair rents सेटा. Then land labor reform क्षेत्र रे हमरो minimum wage act 1948 code on the wages 2020 रे हिछि सेटा. तापरे होछि the child labor prohibition and regulation act 1986. Then maternity benefit हिछि act होछि 1961 and equal remuneration act 1976 सेटा. तापरे सेटा होछि ओमेन मानकर जो ओमेन वर्कर मानकर जो प्रोटेक्ट कराइछि ताकर इंटरेस्ट को
देन पंचायत राज सिस्टम रे रहइबो हमरो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 तापर जोटा होची हमरो डीपीएसपी रे आर्टिकल 40 रे जोटा ऑब्लिगेशन हेची एंड 3 टा पंचायत राज सिस्टम हमरो विलेज लेवल रे रहइची पंचायत ब्लॉक लेवल रे रहइबो जो पंचायत समिति सेटा Okay. डिस्ट्रिक्ट लेवल Okay. रे रहइची जिला परिषद सेउडा Okay. Very good, Priyanka. सुज्ञानी किछि पॉइंट्स आउ रहइबो कि Yes, sir. So starting with the ja कहली सेटा introduction ता short रे मु लिखी छी it is included in part 4 of the constitution although not enforceable by court but presents a moral obligation to the authority of law in ensuring socio-economic democracy. तो ता परे किछिटा importance लिखी छी जेमति they represent a welfare state rather than a police state. They assist the court in assessing and establishing a law's constitutional viability. They strive to realize the noble principles of justice, liberty, and equality. They are the guidelines provided to the government in making laws and policies as per the fundamental principles. They provide a measure to judge the performance of a government. The people can gain knowledge regarding their expectations from their political parties in power. Okay. Okay. Guru? सर नमस्कार सर नमस्कार गुरु को हाँ हाँ सर सबू तो सरी गलानी खाली इम्प्लीमेंटेशन रे आ दुई तीन टा बाकी अछि हां जेमति कि हमर जो कॉटेज इंडस्ट्री पई जो आर्टिकल 43 पई खदी विलेज इंडस्ट्री कमीशन हेची ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड हेची सिल्क बोर्ड कॉयर बोर्ड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड देन एजुकेशन आर्टिकल 45 पई 86th अमेंडमेंट रे जने मैडम पूर्व जो कहले सेटा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एबेर किछि एग्जांपल देई परिबो हमर जोडा बुक रे लेखा हेनी एबेर हमर लक्ष्मीकांत रे किछि लेखा हेनी एमति किछि बुक एबे किछि रिसेंटली किछि एग्जांपल देई परिबो सर कोथिरा नै जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाई एबे रिसेंटली कोन हमर हेछि सर हां गुड मॉर्निंग सर हां सर हेरिटेज प्रिजर्वेशन पई जो आमसार हां गुरु को हां सर जो हेरिटेज प्रिजर्वेशन पई आमसार एक्टा गोटे इंपोर्टेंस थिला ओके न्यूज रे थिला आउ हेल्थ पई जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हला किंबा पीएमजीएसवाई हला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हला आउ एनवायरनमेंट पई एजुकेशन पॉलिसी ओके ओके हां ठीक अछि एजुकेशन पॉलिसी आउ एनवायरनमेंट पई जो सतत इनिशिएटिव जो निया हिज वर्तमान कंप्रेस्ड बायोगैस पई आउ डिफरेंट नॉर्मल एक्शन जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 एगुडा को सब ठीक अछि तन्वी को तापर आसे दे गुड मॉर्निंग सर हां sir directive principle of state policy we can add one line that it is the instrument of instruction enumerated in the Government of India Act 1935. very good Then recent if we took into account the recent policy or recent program, then establishment of Ministry of Cooperations to assist the cooperative movement in India is a welcome step towards the implementation of directive principle of state policy. okay ठीक अछि apart from this the economic equality can be achieved through DPSP like one ration and one nation program. Okay, very good. And one election, one vote. It is for the political equality. Okay. ठीक अछि आशा रहते ना सारी गला सर Thank you, sir. सर सिग्निफिकेंस रे दितेटा पॉइंट ऐड करिवे खाली कि इंस्ट्रूमेंटल फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ the Supreme Court has told that DPSP is a foundation for welfare of state and also a point like vacuum filler to provide socio-economic justice as fundamental right gives us political justice, it gives us socio-economic justice and what provides vacuum vacuum filler for socio-economic justice.
वैक्यूम क्लियर है जो हमारा सफा वैक्यूम फिलर वैक्यूम फिलर अच्छा से गैप टाको फिल करूची कि हमर सब कि जे फंडामेंटल राइट केवल पॉलिटिकल जस्टिस दोतला ये हम्म, आसी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देला तो सो वैक्यूम फिलर अच्छा अच्छा it acts like a critical litmus test for the people to check the government's performance. As B.R. Ambedkar said that without if any government ignores DPSP, then it will have to answer for that before the electorate during election. So वेरी गुड thank you. ओके तो देखो समस्त जहाँ कहला ऑलरेडी जो जोड़ा का हमें तमे कहला मु जस्ट तुमको समराइज कर दोचे जे कौन कौन तुमरो डीपीएसपी रे कहला जे तमे इंट्रोडक्शन जति लिखि परिबो ठीक अछि डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 ରୁ 51 अछि ये सेटा हमारा रिप्रेजेंट करूची इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को तापरे एटा हमर कोन ना मेन एम होची जे the concept of it is made for the welfare of the जो state okay welfare of the state ओटे जो rather than police state अपेक्षा ओटे welfare state तापरे तमे कहबो जे तीनटा जिंस हमर आ भितर रहउचे जोटा कि हमर आमे कहि परिबा जे सोशल तीनटा जिंस को ओटे सोशल आ ओटे हला जो डेवलपमेंट पई ओटे गांधीयन जो तीनटा प्रिंसिपल सोशल गांधीयन आ ओटे हला लिबरल इंटेलेक्चुअल रे तो तापरे हमें लिखि परिबा इथिरे जे मोर जेमति के बार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फंडामेंटल राइट प्रमोट करूची त सिमिलरली एटा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ओके प्रमोट करूची ओके तापरे तापरे हमें कोन ना एग्जांपल देखि दवा जे कोन कोन ये प्रोवाइड करूची जे इट इज एटा भी जदी इट इज रादर एटा जदी भी एटा हमर ओटे जस्टिसेबल पार्ट नुहे बट इट इज द मोरल ऑब्लिगेशन फॉर द जो माने कि मोरल ऑब्लिगेशन ओके तो एटा मोरल ऑब्लिगेशन फॉर द माने पार्टी टू प्रोवाइड हमर कोन ना वेलफेयर स्टेप्स फॉर द स्टेट अदरवाइज कोन करे ना नेक्स्ट टाइम से वोट देबेनी ओके गोटे मिनिट के आमे कहले जे एटा मोरल ऑब्लिगेशन फॉर द माने जो माने रहिले से मानक पय मोरल ऑब्लिगेशन टू डू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट तो एथे कोन कोन हमरो गवर्नमेंट स्टेप्स नै छी तमे ट्राई करिवो कि किछि रिसेंटली जेमति कोऑपरेटिव सोसाइटी पय तमे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहि परिबो लाइक एग्जांपल दे परिबो जे हमरो मिशन शक्ति ओके तो एटा हमर कोऑपरेटिव मूवमेंट रो ओके तमे तापरे कहि परिबो जे हमरो जेमति कि हमर कोन होछि ना मार्टनल बेनिफिट पे हमरो दिया जाय छी ओके इवन इफ तमे कहि परिबो जे हमर कोन ना गांधीयन प्रिंसिपल जो विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री पे जेमति कि हमरा गुरु कहउतले कि हमरा खदी आउ जो खदी इंडस्ट्रीज हमर हेची तापरे आउ जहा जहा पुराना अछि जहा हमर जे लैंड रिफॉर्म हेतला मिनिमम वेज एक्ट हेतला फैक्टरीज एक्ट हेतला चाइल्ड लेबर एक्ट हेतला तापरे हमरा जस्टिस पई तमे ओटे कहि परिबो जो फ्री लीगल एड टू पुअर ता पई ओटे हमरा एबे ई कोर्ट हेची आउ तापरे तमे जस्टिस को मोर ट्रांसपेरेंट करिया पई तमरा लाइव स्ट्रीमिंग करा जाय छी काहा को ना सुप्रीम कोर्ट रो जो उडा का प्रोसेसिंग उडा को लाइव स्ट्रीमिंग करा जाउ छी माने जते चाहिबो माने करंट एग्जांपल दबो प्लस जहा जति तुमको मने नाही पुराना एग्जांपल तुम दे परिबो जेमति कि हमर कोन होची ना राइट टू एजुकेशन रे हमर जतले पळेला जो 45 अमेंडमेंट एक्ट रे 0 to 5 इयर्स तो एथरे कोन करा गला ना तमरो
sorry 6 to 8 years 6 to 14 years को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया गला तो एथिरे डीपीएसपी रे हमरो 0 to 6 years याली चाइल्डहुड केयर जो अंगनवाड़ी कथा कहूचे सेटा तमे 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट जोथरे कि हमरो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गला पंचायत म्युनिसिपलिटीज को जोटा कि आगुरु डीपीएसपी रे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत थिला तो सेथिरे ताको गोटे प्रैक्टिकल शेप दिया गला ओके तो एमिति हमरो बहुत गुडे हमरा पॉइंट तमे लिखि परिबो खाली इंट्रोडक्शन आगे लिखिबो जे हां एटा हमरा सोशियो इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करूची वेलफेयर ऑफ स्टेट कथा कहूची इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कथा कहूची जति भी एटा जो जस्टिसेबल नुह बट इट इज मोरल ऑब्लिगेशन फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट the directive implement the policy and program for the development of the people otherwise they will be questionable or accountable during the election okay ए सब जिन छोटा तमे ऑन करिवो ना ट्राई करिवो लेखिया पे ओके सो लेट मी शो यू सम ऑफ द आंसर जोटा कि हमें देखि परिबा इथरे कोन आंसर अछि Good. ट्राई करिवो माने टिके पॉइंट फॉर्मेट लिखिया पे बस केतोडा के लिखि जल्दी ओके ओके तो इथरे ये लिखि जंदी कि प्रियम्बल रेफर टू द प्रियम्बल लेटर क्वेश्चन टीपीएसपी The DPSP Directive Principle of State Policy Part 4 रे अछि आर्टिकल 36 to 51 अछि guaranteed social and economic democracy तापरे tries to establish welfare state तापरे the concept of DPSP हमें नहीं छे आयरलैंड रो के इस कॉन्स्टिट्यूशन रो तो इथरे कोन होची ना सोशियो इंपोर्टेंस ऑफ DPSP सोशियो इकोनॉमिक राइट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया तापरे इनइक्वालिटीज रिड्यूस इनइक्वालिटीज तापरे through tax structures subsidies and various welfare scheme article importance of DPSP re 39 accountable in policy formation equality at work and minimum wage article 43 fair market to promote cottage and industries and cooperates in the rural area 43A increase the quality of the standard of the living of the workers तापरे human capital article 45 provide free and compulsory education up to 10th level 86 amendment act ना एटा नहे तो 0 to 6 years थिला ओके 0 to 6 years तापरे improve public life article 47 ने जोटा अछि तमे सेथरे लिखि परिबो जे हमर कोन ना जेमति कि हमर एग्जांपल दे परिबो हमर स्टेट की सेंटर कथा लिखि परिबो आयुष्मान भारत योजना लाइक हमर बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना पब्लिक हेल्थ रो इंप्रूव करिया पय हमर तांको कोन दिया होची ना इंश्योरेंस प्रोवाइड करा होची जहा पारिबो गोटे लिखिबो किंतु तार गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल दबो जेमति कि एग्जामिनर को डायरेक्टली टच करिवो कि ना ये पिलर डायरेक्टली जिनसना जानि छी आ प्रैक्टिकल एग्जांपल दोची ओके तापरे तमरा जदि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड दबो ना टू इंप्लीमेंट इट समय दे कि जो टेकिंग हमरा कोन ना ट्रिपल तलाक बिल कथा लिखि परिबो ओके एग्जांपल ले परिबो कि ट्रिपल तलाक बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड सो वुमेन राइट्स से आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हैला वुमेन एजुकेशन तापर इक्वल अपॉर्चुनिटी national importance to protect monuments
मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट पाई तमे गोटे एग्जांपल दे परिबा जे हमर जो हृदय स्कीम हला हेरिटेज डेवलपमेंट जो प्रोग्राम जेमति कि हमर पूरी रो हड़ा स्कीम हला कि हृदय स्कीम हला तो एठी एग्जांपल दे परिबो कि गवर्नमेंट हमर नै इंप्लीमेंट करिस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हमर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ओके हमर जेमति काउंसिल एग्रीमेंट हला किबा सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ओके इन द पब्लिक सर्विस टू बी हेल्ड some limitation रे कोन लिखा है जे ना दिस इज नो नॉन जस्टिसेबल नेचर तापरे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमर स्टेट और सेंटर तापरे कंप्लीट विथ फंडामेंटल राइट तापरे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लॉ कैन बी struck down by the court or validity of the DPSP. So despite the above limitation, DPSP are the fundamental to the governance of the country. Yes, a point like a very, very important point. The DPSP are the fundamental for the governance of the country. So DPSP have seemed as that inspiration for many programs by both state and central government since independence. MG नारेगा भी लिखि परिबो हां MG नारेगा भी लिखि परिबो राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड तापरे लॉज ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट हला प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द काउ आर्टिकल 48 हमें ए सब गुडा का आंसर लिखि परिबो ना हरि अछि government policies like our integrated rural development policy तापर integrated tribal development program PM सड़क योजना आयुष्मान भारत योजना तापरे हमरा gives the standard of living अच्छा 80 example अंकर start है government has reformed the land laws okay state have instituted the scholarship program तो सब गुडा तमे लिखि परियो जननी सुरक्षा योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट पीएम मातृत्व सुरक्षित योजना ओके preserve the standard of living environment protection act wildlife protection act okay तापर legal aids have been made compulsory on all classes all cases okay तो आप हमरो pertaining the criminal laws foreign like हमरो रहउची हां foreign हमरो international peace पे हमरो नाम हैला international solar alliance article 51 रे based on international human values India's commitment to Paris climate change okay so certainly sufficient awareness among people DPSP provide good help need of the keeping the government accountable okay बहुत गुडे पॉइंट लिखि छ ओके किंतु टिके आकु कोन करो ट्राई करो कि टिके प्रेजेंटेशन टिके बेटर करिया पाए ओके टिके हैंड राइटिंग आउट टिके भलो करिया को ट्राई करो ओके आ प्रेजेंटेशन किंतु बहुत गुडे पॉइंट्स तबे इथरे लिखि छ ओके मंदिरा लिखछन ना हला हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा बुझी पालो इथरो ए क्वेश्चन ए कोन रहिबो तो ना कार किछि डाउट रहला प्रथमे तमे इंट्रोडक्शन लिखिबो जे कोन हमर डीपीएसपी तमे लिखि परिबो जे हां हमें एटा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करूची तमे लिखि परिबो जे हां एटा हमर आर्टिकल 3651 आयरलैंड रो आसी कि जहां भी तमे लिखबा कथा लिखि परिबो इंस्ट्रुक्टा प्रितर कैरेक्टरिस्टिक्स रे एटा हो जे फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री ओके वेलफेयर स्टेट कथा कहूची तापरे दीज आर the instrument of instruction during our British time रे जोटा थला और इनकॉर्पोरेट कराला तापरे कोन हमरो मेन प्रिंसिपल जो जोडा अछि जो मैं हमरा क्वेश्चन एथला जो ओके ता क्वेश्चन जो हमर थला जे मेन प्रिंसिपल नहीं इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपोर्टेंस कोन ना तमे देखले सोशियो इकोनॉमिक आगर देखिबो सोशल ले कोन इंपोर्टेंस थिला
जे तमरो गोटे लिखि परिबो जे फ्री लीगल एड टू पुअर हला कि हमरो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन हला तो जहा जहा से लाइवलीहुड हला तो सेटा लिखलो तो सब तीनटा को सेक्शन लिखियो तार एग्जांपल दो फाइनली गवर्नमेंट रो पॉलिसी कोन तमे लिखियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिटेशन भी लिखा है करिवे लिमिटेशन नहीं लेखा माने कहिनी लिखिया पई जदि तुम पाखे लागुची कंटेंट मो पाखे कम अच्छी ओके लिखि परियो चैलेंजेस कोन कोन गवर्नमेंट स्टेप्स तो नै छी सिधे लिमिटेशन खाली लिखा है जे एटा ओटे नॉन जस्टिसेबल सेति पई माने कोन होची ना एते जदि गवर्नमेंट भी किछि न करूची भी यू कैन नॉट रेज योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओके तो सेटा ओटे होची तो किंतु जदि भी एटा नॉन जस्टिसेबल हमें कहले एटा कोटे ओटे ऐड करियो कारण ओटे इंपोर्टेंट पॉइंट एटा कि जदि भी एटा नॉन जस्टिसेबल इट इज मोरल ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट टू make program and policy development program and policy for the welfare state otherwise they are accountable to the people for their performance otherwise next time sir vote deveni okay second question in India there is a perfect blend of federalism and parliamentary system of government आप तमे कमेंट करियो perfect blend of federalism with parliamentary system. हाँ तन्वी को Sir, first introduction रहिबो the blend of federalism and Indian parliamentary system is the basic features of Indian constitution, and the federalism is defined in the politico-administrative system of India. The federalism is defined as the distribution of a power between the center and the state. But the distribution of a power is somehow tilted towards the union governments. So there should be a proper balance between the federalism and Indian parliamentary systems. Then sir हम किछि example दे परिबा federalism रो जेमती federalism रो rigidity of Indian constitutions, bicameral legislation, then dual polity, establishment of various state legislative assembly, then parliamentary system रे हम दे परिबा जेमती कि various list अछि under the 7th schedule of Indian constitutions, central list, union list, then concurrent list and state list. But the concurrent list and the union list is more powerful than the state list. देखो तमे हमको एथिरे फास्ट दीटा पार्ट गोटेला फेडरलिज्म आउटेला कोन आउटेला पार्लियामेंटरी सिस्टम दीटा कर कैरेक्टरिस्टिक्स तमे कोन कहबो ओके जे फेडरलिज्म रे कोन हेची को भडा थाए आउ हमरो पार्लियामेंटरी सिस्टम हमरो इंडिया रे दीटा कर मिक्स हम फेडरल सिस्टम भी अछि और पार्लियामेंटरी सिस्टम भी अछि सेटा हमें देखिबा ओके ठीक अछि Okay sir. प्रियंका वो मधुमिता प्रियंका तापर मधुमिता हाँ सर आपण जेमती बोले सेमती ही लिखिछि फास्ट फेडरलिज्म रो इंट्रो रहिबो फेडरलिज्म इंट्रो होछि इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द सेम टेरिटरी इज कंट्रोल्ड बाय द टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेटा रहिबो जेमती कि नेशनल लेवल टा होछि हमर रेस्पोंसिबल फॉर द border governance of larger territorial areas while smaller subdivision states and cities govern the issues of the local concern. Then tapre feature of the federal government which is dual government, national regional level re, then supremacy of the constitution, bilateral legislature, independent judiciary, then division of power between the national and regional government, that is union, state and concurrent. tapre sir parliamentary system of the government रहिबो article 75 74 and 75 parliamentary system at the center and article 163 and 164 in the state. Then also called the cabinet government, responsible government or Westminster model of the government. तापर रहिबो president होची national and executive DGR or executive सेटा. तापर majority party rule in Lok Sabha. Ministry collectively responsible to the parliament in quarrel to the Lok Sabha in parliament.
Article 75 तापर dissolution of the Lok Sabha by President on the Prime Minister recommendation तापर sir significant perfect blend again significant रे को केतरा better coordination between the executive and the legislature and prevents authoritarianism, representing diverse group, responsible government and flexibility. ओके मधुमिता को सर फीचर्स से जहाँ कहले सेटा ही मु लिखी छी ता संगे एक्स्ट्रा सर ऐड करी छी बाई कैमरालिज्म टा ऐड करी छी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैविंग लेजिस्लेचर ऑफ टू हाउसेस दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस सेटा की सर अछि तापर यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेटा गोटे लिखी छी सेतर किछिटा पॉइंट लिखि देई छी सर ओके strong center state can be recognized new state formation all India service veto power of the state bills integrated audit system integrated judiciary constitution partly rigid एतिकी सर तापर सर conclusion टा लिखी ओके ठीक अछि आउ की कहबो हां आसे देखो सर मो इंट्रो रे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को दुईटा रे डिवाइड करछि और तांको भीतर ब्लेंडिंग शो करछि और डायग्रामेटिकली अछि सेटा तापर पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम रो ब्लेंडिंग को मु तांको भीतर रिलेशन रे शो करछि कि सब पॉइंट्स समस्त जो कहले ताको ही जस्ट कोरिलेट करछि किछि एक्स्ट्रा पॉइंट अछि जेमति कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अछि बट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अछि जोटा कि इंडिया रे बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेतबे हम ताको क्वाजी फेडरलिज्म भी कहउचंती सेमती पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी अछि आ फेडरल सिस्टम रे हमरा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी अछि तो हम इंडिया रे बहुत अच्छी कि पार्लियामेंट्री सोवरेन एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तापर हमरा पार्लियामेंट्री सिस्टम विथ यूनिटरी बायस अछि आ एपट माने फेडरल सिस्टम रे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अछि आ गोटे फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे डबल मेंबरशिप अछि मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रे सो करचंती कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी हमरे दीटा का फीचर अछि तो सर एतिके आ सब वेरी गुड ओके आउ की कहबो और should I start? Okay. श्वेता लिखो गुड मॉर्निंग सर मु आउ गोटे आउ दीटा पॉइंट ऐड करिवि गोटे हला यूनिफाइड जुडिशियरी जोटा कि इंडिया रे जेमती इंडिया हैज द यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम द हाई कोर्ट व्हिच आर द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट कम अंडर द सुप्रीम कोर्ट इन द हायरार्की आ गोटे आपनकर हला सिंगल सिटीजनशिप जेमती इंडियन स्टेट्स डू नॉट provide separate citizenship like single citizenship under part 2 of the constitution सेतिके सर ओके तो एटा तमरा कोथरे आसीबो फेडरलिज्म रा आसुचे फेडरलिज्म रो सिटीजनशिप तो सिंगल सिटीजनशिप फेडरलिज्म रो अगेंस्ट रहि जाउची तो एटा यूनिटरी बायस जोठी हबो तमरो जोठी तमरो कोन होची ना मोर फेडरलिज्म रो चैलेंज रेटा तम कहि परिबो माने फेडरलिज्म रो कोन प्रॉब्लम अछि कहि परिबो सिंगल सिटीजनशिप जेमति कि यूएस रे दीटा तमरो माने डुअल सिटीजनशिप ओके दी डुअल सिटीजनशिप स्टेट पाई गोटे सेंटर पाई गोटे किंतु हमरो फेडरल सिस्टम हमें कहू जे किंतु सिंगल सिटीजनशिप हमें फेडरल गवर्नमेंट कहू जे किंतु हमरो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी तो एटा ता चैलेंज माने कोन कहलो ताकू जेतले क्रिटिकली कहबो काउंटर करे पाए के हां ने देख आ मनोरंजन को सर मो मेरिट कोइ दूजी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रो हां एकरे वाइड रिप्रेजेंटेशन coordination between legislature and executive prevents despotism and alternating government and responsible government sir. Okay, very good. Hello. So let's see directly हमें किछरा आंसर देखिबा ओके हमरो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम रे हमें जो देखिले फेडरलिज्म आ पार्लियामेंट्री सिस्टम रे कोन कोन अछि ओके तो
हमर जो दीटा को मिसई के हमरो देखो हमरो डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट तो हमर कोन होची ना हमें जो कहूचे इंडिया डिफरेंट स्टेट को अंडर को नहीं कि हमर जो इंडिया हेची यूनियन ऑफ इंडिया तो या नुहे कि यूनियन टाको माने एमाने कोन करि परिबे हमर जो मेन थेम हला जे सेंटर सबले रहिबो ओटे स्टेट को से डिवाइड करि परिबे ओके जेमति कि होउची हमर उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तराखंड हमरे सो हेतला तो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट तो तमे दीटा को कौन करिवो ना पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम रे कौन पार्लियामेंट्री सिस्टम रे तमे जानि छ जे collective responsibilities जो थी कि executive are responsible to the legislature particularly in the center it is Lok Sabha and state it is Vidhan Sabha okay state legislative sorry screen share है नहीं ऐसे नहीं अच्छा screen share sorry ଏବେ ଦେଖାଗଲା ତ Okay, so parliamentary political parliamentary system, federalism parliamentary system. So indestructible union of destructible state है तो ये जो parliamentary system जो हमें कहले जे तो parliamentary system रे कौन रखिबो collective responsibility of the executive to the legislature or they माने से पर्यंत power रहबे जो पर्यंत तंकर majority in the Lok Sabha or legislative assembly ओके तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे तो फेडरल रे एमती किछ नाही ओके तापरे नॉमिनल हेड और रियल हेड एग्जीक्यूटिव बोथ ऑन सेंटर एंड स्टेट जेमती कि हमें कहबा नॉमिनल हेड के ना सेंटर रे हमर प्रेसिडेंट रहले स्टेट रे गवर्नर रहले रियल एग्जीक्यूटिव कोठी के ना हमर पीएम रहले सेंटर रे और सीएम विथ माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहबे स्टेट रे ओके तो एडा हो जे हमर पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रो इंपोर्टेंट गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हमर पार्लियामेंटरी फॉर्म रे हमर कोन रुहे ना हमर मेजॉरिटी पार्टी रूल्स जहार मेजॉरिटी रहबो हमर फेडरल सिस्टम रे डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी एंडोर्ड विथ सोवरेन पावर टू सेंटर एंड स्टेट टू वर्क ऑन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन ओके तो इथे जो हमर पावर टा फेडरल सिस्टम रे कोन हुए ना जो लिस्ट उडा हमर दिया जाय छै जेमति केला कोन ना यूनियन आउ सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट आउ कनकरेंट लिस्ट तो समस्ते समस्तंग रेस्पेक्टिवली डोमेन रे काम करिवे किंतु गोटे कथा होची जे हमर इवन इफ हमर कोन होची ना स्टेट लिस्ट रे भी हमर सेंटर काम करि परिबा स्पेशल प्रोविजन रे हम देखिबा तापरे हम पार्लियामेंटरी सिस्टम विथ यूनिटरी बायस जेमेति के होची जे पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एंड इंटरफेयर इन द स्टेट मैटर ड्यूरिंग इमरजेंसी पर्टिकुलरली जतबेले प्रेसिडेंट रूल पडुची 356 हैला किबा आर्टिकल 249 ने जतबेले राज्यसभा कोची स्पेशल राज्यसभा रोडे स्पेशल पावर अछि आर्टिकल 249 ने जोतरे की जदि स्टेट लिस्ट कोनोसी लॉ परिवार अछि सेंटर सो द रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 तो our parliamentary system with unitary bias so take parliament can legislate and interfere in the state matter during emergency एथिरे कोन the division of the power between center and state जेमति कि union list रहला state list and concurrent list and district list हमर रहउछि center पाखरे okay तो हमर parliamentary कोन रहउछि हमर flexibility of the constitution some part of the constitution can be amended by simple majority किंतु हम फेडरल सिस्टम रे rigidity of the constitution is the federal feature of the constitution of India cannot be amended without special majority okay प्लस हमर जदी रहउछि जोटा कि स्टेट रो जदी लिस्ट सेटा आसुछि कि स्टेट को अफेक्ट करछि 50% ऑफ द स्टेट हमर रैटिफिकेशन करिवो जेंति कि हमें कोन कहले जीएसटी बिल हमर स्पेशल मेजॉरिटी रे माने कोन होछि ना तमरो पास हबो प्लस जो स्पेशल मेजॉरिटी रे इच हाउस रे पास हैला प्लस हमर 50% ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन गोटे जागा रे तुम जदी माने देई देबो एग्जांपल पे देई देबो ओके धर हमें कहले जे रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट हमरो जेमति कि कॉन्स्टिट्यूशन इजीली हमरो अमेंड करी हबरे तमे कहि परिबो कि हमरो जीएसटी फीएसटी रो एठी एग्जांपल देई परिबो ओके तो पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी
and our constitutional supremacy. Federal structure re constitutional supremacy, our parliamentary form re parliamentary sovereignty. It is single citizenship. एठी हमारा फेडरल सिस्टम रे डुअल सिटीजनशिप तम लेखि परिबो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और डुअल सिटीजनशिप लाइक हमरो यूएस रे एग्जांपल दे परिबो. ओके, double membership, that is minister are the member of both legislative and executive एठी हे परुछि. एठी separation of the power between legislative, executive and judiciary. Federal system रे coordination between हमरो legislative and executive रहउछि. ओके, त कोठी ना हमरो parliamentary system according to Jennings Indian constitution is mainly federal with unique safeguard under parliamentary system. तो हमारा दीटा को अच्छी हमारा तमें जो देखिबो जे हमारा फेडरल सिस्टम केमिति जे हमारा स्टेट लिस्ट अच्छी, सेंट्रल लिस्ट अच्छी, ओके, स्टेट लिस्ट आ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट अच्छी, तो एटा फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूची. तापरे हमरो तमे कहि परिबो जे जेमति कि हमरो इवन इफ हमरो स्टेट लिस्ट को भी हमरो जो पंचायत राज लोकल लेवल है तो ओटे फेडरल स्ट्रक्चर को एटा हम रिप्रेजेंट करूची. तापरे तमे पार्लियामेंट्री फॉर्म तो हमर तो डेफिनेटली हमर कोन होची ना पार्लियामेंट्री फॉर्म होची जे हेड ऑफ स्टेट जने अछन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जने अछन. तो टोटल जो executive are responsible to legislature एटा तो दीटा रका हमारा blend of हमारा parliamentary as well as हमारा federal system. अब जनकर आंसर देखि दबा. In India there is a blend of federalism with parliamentary system of government. Federalism was a system of government where power is divided between center and state. In parliamentary system of government, executive is a part of legislature, okay, and which implement law and play the active role. तो इसे फेडरल सिस्टम रे से देखले कोन कोन हमर फीचर्स अछि, गवर्नमेंट अछि, यूनियन एंड स्टेट डिवीजन ऑफ पावर हिसी. तो जोटा कि 7 शेड्यूल लिस्ट हमर अछि, स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, डिफिकल्ट टू अमेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, federal court and state court, okay, bicameralism, upper house, lower house, supremacy of the constitution, okay, supreme and fundamental law of the land, written constitution. Though India adopted federal form of government but does not follow certain principle of federalism, it has make center more powerful, which is the feature of the parliamentary system of the government. तापरे हमारा parliamentary form of government रे government or cabinet government is due to concentration of executive power in the cabinet. Article 74-75 जो थे कि हमारा parliamentary system at the center होची, और state रे हमारा 163-164. तो हमारा feature of parliamentary होची prime minister, center of power, okay, head of the government तम लिखि परिबो, okay, secretary, okay, oath of secrecy, okay, तापरे हमरो executive meeting आउ message होची nominal head and real head. In India PM is the real head and nominal head होची president. Executive is a part of legislature. Example, the person should be minister and the parliament become a member of the executive. Constitution, every person or minister not more than, okay, अच्छा, more than one house रे तमे माने रही परिबनी. मिनिस्टर जदी जो not a member of the, he just okay, but जदी जने मिनिस्टर होची, even if he is not a member of the parliament, तो से हे परिबो, but she just to be a member 6 months भीतर जदी न होची. Okay, majority party rules, तो जो जोड़ा collective responsibility to the Lok Sabha. Okay, introduction, introduce the non-confidence motion against the government. So parliamentary opposition to check the arbitrary action of the authority
दीटा तो पार्लियामेंट्री कौन रहला फेडरल सिस्टम में कौन रहला दीटा का तमे एग्जांपल देख लिखे छ ओके सिविल इलेक्शन से एटा पूरा उल्टे ही लिखा है ठीक अच्छे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा ओके right to constitutional liberty is often considered as the most fundamental of all the fundamental rights. Okay, right to constitutional liberty is often considered the most fundamental of all fundamental rights. Okay, only Vaku. Sir, according to B.R. Ambedkar, right to constitutional remedies is the soul and heart of it. Sir, it is often considered as the most fundamental of all the fundamental right because it has the privilege to move to the Supreme Court directly and it cannot be suspended with the exception of generally given by the Constitution. Sir, Article 32 makes the Supreme Court the safeguard and underwriter of the major rights, and further the capacity to issue writs goes under the original jurisdiction of the apex court. It protects India from being tyrannical, and violation of fundamental right is is the major region for which Article 32 is exercised. And sir, in example we can take in a recent case the TV host Arnav Goswami case, in which it was declared that no authority in country can penalize somebody in coming and exercising his or her rights under Article 32. And in conclusion, we can say because the Article 32 secures the protection of our basic right, the right to constitutional remedy is regarded as the most crucial fundamental right. It assists the citizen in bringing a mass to the court in the event of violation of their fundamental rights. Okay. Sir, intro re mu rakhichi Indian Constitution in Part 3 and Article 32 provides for legal remedy for the protection of fundamental rights against the violation by the state or other institution or individuals. Then, sir, fundamental for all fundamental rights re likhichi. Article 32 explains the right to constitutional remedy and a crucial fundamental right. Then Dr. B.R. Ambedkar stated that heart and soul of Indian Constitution. Then if there is any violence of fundamental right, a citizen of India can go to Supreme Court under Article 32 and to High Court under Article 226. Then sir, Supreme Court can act as a protector under Article 32, and Supreme Court can issue a writ against the government or any person in the country. Okay. Then sir, किछिटा लिखि देछि. केस किछि दे जाओ. No sir, खाली रीड्स गुडा नहीं एथिरे तुमको केस लिखिया पड़ो काहे को कहूची तमरो केमिति फंडामेंटल राइट गोटे वायोलेशन हेइथिला आ सुप्रीम कोर्ट केमिति तारा तमे आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट को जाइथिला आ सुप्रीम कोर्ट तुमको न्याय देइथिला सेटा तमे कहबो जेमति कि तमे हमें जो पहिले सीरिया सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन जो थरे कि तमरो माने मुंबई रे जेतोले हमें कहउथले जे काली जे मुंबई रे जेतोले शिवसेना फाउंडर ओके बाला ठाकरे डेथ हेतला प्रोसेसन होतला थ्रू आउट मुंबई स्ट्रक डाउन माने पूरा स्टॉप हेतला केते समय पई दि जण झिय पिला जाय के हमर फेसबुक रे लेखिले आ ताको अरेस्ट करा हेला कोन पई ना ओटे हमर एमिति ओटे जो गवर्नमेंट रो गोटे रूल अछि जे आईटी सेक्शन एक्ट 66 रे तो तमे जदी किछि गवर्नमेंट अगेंस्ट रे लेखुछ जदी देउटा के हमर ताको सिक्युरिटी किबा रॉयल की ए सब हो जे तो सेथिरे तुमको
ମାନେ ପନିସେबଲ ଆକ୍ସନ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଏଇଥିରେ ପିଲା ଦିଟା ଯାଇକି ଲେଖିଦେଲେ ଫେସବୁକ ରେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଲୟର ଯୋଉ ଥିଲେ ସିଏ ସିଙ୍ଗଲ ସିଏ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ଲିଟିଗେସନ ଆମର କରିଥିଲେ PIL ଫାଇଲ କଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ତମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆର୍ଟିକଲ 19 କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 66 ଭାଓଲେସନ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ତମେ, ତେଣୁ ତମେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ କି ଶ୍ରେୟା ସାଙ୍ଗଲ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ୟୁନିୟନ ଯୋଉଥିରେ କି ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ 66A of IT Act has demolished or become null and void because of ଆମର କଣ ହଉଛି violation of article 19। ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଲିମିଟରେ ହେଇଥିଲା। ତମେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର କେସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି କି ରାଇଟ ଟୁ କ୍ଲିନ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଗଲା। ଓକେ, ତ ଏମିତି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଦେଇକି କରିପାରିବ। ଓକେ, ହଁ ରିଷି କୁହ। ସାର୍ ଟିକେ Good ସେକେଣ୍ଡ good ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା morning, ଆଉ sir. ଟିକେ କହିବେ? ହଁ, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ତାପରେ ଆଗ ରିଷି କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତମେ। ହଁ କୁହ। Good morning, sir. Already we discussed our important judgment like Shreya Singhal versus Union of India. That's struck down section 66A IT Sec 2000. It's already discussed, sir. And one of the most important is our Mira Santosh Pal versus India, Union of India. That Supreme Court allowed 24 weeks fetus after examining doctors to the life of women that preserve our Article 21. And Okay. and Gaurav Jain versus Union of India, that direction by Supreme Court. It's a protection of women for prostitution and rehabilitation for their children, which preserve our it's Article 23 and 24. ହଁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ମାନେ ଓମେନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି କୌଣସି ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ ମିଳୁନି, ଯଦି ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ ଇଏ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେଇ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ ମିଳୁନି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ତାଙ୍କର ୟେସ୍। And sir, we already discussed about the REITs, like it's heavier cost for us and all about our REITs maintenance provision. And importance, if we discuss our importance on Article 32, the role of Supreme Court in regarding constitutional remedies that have some points like Supreme Court can issue REITs for fundamental rights and not others through the country. And presides Supreme Court powers of judicial review, narrow jurisdiction, and its Article 32 itself fundamental rights, and Supreme Court can refuse to exercise jurisdiction. Yes. ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ମଧୁମିତା ତମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା କହିଲ ନା କି Thank you, sir. ପ୍ରୋଭାଇଡ ନାଇଁ ମଧୁମିତା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଲିଗାଲ ରିମେଡି କହିବନି, ଏଟା ତ ଅଲରେଡି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଲିଗାଲ ରିମେଡି ବଦଳରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା sir. ହଁ ତାପରେ ଆମର ୟେସ୍ ଗୁରୁ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ରହିଗଲା କି? ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୋର ଡାଉଟ ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଁ ମାନେ କୁହ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାକ କହିଲେ ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟା ସିଂଘଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୌରବ ଜୈନ ଥିଲା, ଆଉ ଦିଟା ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀର କେସ୍ ଟା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରୀନ କହିଲେ। କ୍ରାକର କଥା କହୁଛି। ଓକେ, ତ ତା ପାଇଁ ବି କାରଣ ଏଟା ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କୁ ଭାୟୋଲେସନ କରୁଛି ନା, ତମର ଯୋଉ କ୍ଲିନ ଏୟାର, ତ ସେଇଟା ବି ତମର ଇଏ କରୁଛି ନା। ତମେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବ ତାକୁ ମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମୀରା ସମଥିଙ୍ଗ କେସ୍ ଟା କଣ ଥିଲା ସାର୍? ହଁ, ମୀରା ସନ୍ତୋଷୀ କେସ୍ ଟା କଣ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର କହୁଥିଲେ ରିହାବ? Yes, sir. Sir, in Mira Santosh Pal versus Union of India, that Supreme Court allowed 24 weeks of fetus. That after explaining our daughters to the life of women, that explain and which preserve our Article 21. Thank you, thank you. Okay, so just 1 minute. Okay, I'll come back.
Okay, so just a minute. ଏଥିରେ ओके तो हमर जो हमें जो पढ़ुଥିଲେ आर्टिकल 32 जोटा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी तो एथि कोन लिखि परबे एटा विजिबल होउछ त समस्त ना होउनी होउची सर So Article 32 of the Indian Constitution guarantees the right to constitutional remedy. So it ensures the fundamental right in the Constitution are not merely declaration, so they can be enforced uh, whenever they are violated. तो जदि तमर fundamental right violation होउची तमे जाई परिबो directly Supreme Court to under Article 32 for enforcement और Supreme Court पाखरे different instrument अछि जेमति कि different reads अछि to enforce your fundamental rights. Okay. So, importance of 32 kono? It is empower the Supreme Court to issue writs. जो छटा को रेट्स अछि habeas corpus mandamus prohibition statutory guarantee for enforcement of fundamental right तापरे तमे कहि परिबे that it is the basic feature of the Indian Constitution that cannot be taken away. It empower us to directly approach the Supreme Court in case of fundamental right are violated. तापरे तमरो it provides the Supreme Court the power of the judicial review for establishing guarantor of the fundamental right of the citizen. Okay, so next होउछ जे तमे केते बडे केस दबो जे फंडामेंटल राइट तमर वायोलेशन हेतला तमर केस दबो कौन दे परिबो जे मीरा संतोष पॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स द सुप्रीम कोर्ट allowed the medical termination of a 24 years 24 months week, 24 week. sorry 24 week fetus after examine the danger of the life okay of the woman so thus right to life को एटा protected कराइला and personal liberty okay तो एटा गोटे केस तो मीरा संतोषी वर्सेस तापरे तमे देई परिबो श्रेया सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन तो जो थ्री के हमर कोन होला ना स्टॉक डाउन सेक्शन 66(4) of the Information and Technology Act 2000 which violate the right to freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1) okay Gaurav Jain versus State of Union sorry Union of India जो थ्री की direction for the protection of the women from prostitution and rehabilitation for their children with freezer of the right against exploitation. एटा तमे दी तीनटा पॉइंट तमे लिखिबो इथरे the Supreme Court allowed the medical termination टा गला so right to fundamental जो fundamental right Article 32 रे जेहेतु एटा rights to एटा गोटे right we protect other fundamental rights एथिमे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेफर करथिले Article 32 को as a heart and soul of Indian Constitution. So without this right other fundamental right would have been would have माने कोन ना प्रॉपर एम्पावरमेंट हे पर नथन जदि हमर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करिया पे कोनसी राइट नथन ओके तो एटा तमे लिखि परियो ठीक अछि
तो इसलिए तो मैं as the right to get fundamental right protected itself by a fundamental right with article 32 called the fundamentals of the fundamental right provided guaranteed and effective in inexpensive and summary remedy for the protection of fundamental right, empower the Supreme Court as a guarantor and protector of the Constitution of India, protect the India from being tyrannical. Okay, violation of the fundamental right is since one on for the exercise of the Article 32. Okay. Arnab Goswami case, election recent Arnab Goswami case. No authority in the country can penalize somebody in coming and exercising his or her rights under Article 32, as Article 32 is a fundamental right of all fundamental rights. Okay. ठीक अच्छी तमे अब दी तीन टाइम से जो ट्राई करिवो एग्जांपल दबा पाए. ओके. Sir, we can also add na Menka Gandhi versus Union of India. हाँ करी परियो. Menka Gandhi versus State of India जो कि right to life of personal liberty. ओके. तो सेटा हमरा करी परियो. सर नमस्कार सर. सर हाँ, हमरो सही. एबे जोड़ा सर हला हमरो जो रिहैबिलिटेशन स्कीम रे मैरिड डॉक्टर सर पाई परियो होगी ऐड करियो सर. कोटा एबे जोड़ा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देले जे जने मैरिड भी हेइले डॉक्टर भी मैरिड हेइ सर तापर भी से रिहैबिलिटेशन स्कीम रे सर जॉब पाई परियो सेटा भी सर हेइ परियो आड 21 आर्टिकल 21 सर अछि लिखि परियो. ओके लिखि परियो तमरोटा फंडामेंटल राइट रे अछि ना लिखि परियो. सर थैंक यू. Okay, so last question is hame kariba. What do you understand by concept of freedom of speech and expression? Does it cover hate speech also? Why do the film in India stand on a slightly different plane from other form of expression discussed? The freedom of speech and expression nago kahibo. तापरे हेड स्पीच एटा कवर करू छिना नै कहबो. हमर फिल्म इंडस्ट्री रो कोन हमरो एक्सप्रेशन को नै कि तांकर कोन माने रहउछि स्टांस तापटे भाई. माध्यमिक देखबो. Sir, introduction रे mu lekhichi freedom of speech and expression implies that every citizen has the right to express his or her views, opinion, beliefs and conviction freely by words of mouth, writing, printing, picturing and or in any manner. तापर सर Okay. speech and expression रो किछिटा सर पॉइंट लिखिछि जेमति कि सर सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड freedom of press, freedom of commercial advertisement, freedom of silence, right to propagate one's view as well as views of others, right to telecast, that is government has no monopoly on electric media. And then sir, right to demonstration or picketing by picketing but not right to strike. Then right to know about government activities. Okay. Then Guru. सर एठी आमे से जोटा कहिले बे मैडम सेटा लिखि सारी किना आमे 19(2) डाकू जदी लिखिबा हले हम भाबुजी भलो होंदा कोन पैना सेतरे तार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जाको अछि जा अंडर रे हेड स्पीच टा पळे आछी इनडायरेक्टली तापर हेड स्पीच हेलो हां हमरा हेड स्पीच को अलाउ कि नै आगे सर नॉट अलाउड. नॉट अलाउड काहे के अलाउड नै सर एटा कम्युनल हार्मोनी को इंपैक्ट पकेइबो डायरेक्टली कहबो कि एटा इनसाइड इन जो लोक मान को भटकोछि इनसाइटमेंट करूछि किंबा तमरो इट इज लीड्स टू द रॉयट हबो किंबा कम्युनल वायलेंस हबो तो सेथि पई हेड स्पीच टा को तुमको अलाउ करा जाय नै. ओके
Yes, sir. प्रथमे allow करा जाए नहीं कौन पे allow जाए करा जाए नहीं कारण हेड स्पीच टा leads to different type of communal disturbance होची किंबा तमे communal riot होची कि incitement of the people होची तो सेटा तमे definitely कहबो ओके आउ कोन सर आर्टिकल 19 अंडर जो आसुची रेस्ट्रिक्शन रोची हेड स्पीच अगेंस्ट रे तो सेटा आपनकर नेशन रा सोवरेनिटी आ इंटीग्रिटी को मेंटेन करया पई इंप्लीमेंट हेची देन मूवी ऊपर को आसिले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द इंडियन मूवी provided it must not impose a threat to the national sovereignty and integrity and peace of the state. So censorship implement ହେଇଛି film ପାଇଁ then grant of certification ବି ଦରକାର movie release ହବା ପାଇଁ କିଛି एग्जांपल अछेंदी ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ପଦ୍ମାବତ ମୁଭି ନେଇ ପାରିବା ସେଇଠି କେତେଟା सीन को कट करा ଯାଇଥିଲା censorship through ରୁ ଆଉ काश्मीर फाइल हे परियो हाँ काश्मीर फाइल्स ओके आउ कोन थिला आउ कोन लिखा हे परिबा परे हां सुज्ञानी को सर ओडिशा पंजाब गोटे मूवी थिला सेटा बहुत कंट्रोवर्शियल होतिया उड़ा उड़ता पंजाब सर जो ड्रग्स ऊपर हां तापरे रिहान आउ किछि पॉइंट सुज्ञानी ना रिहान को Sir, it has some Indian Penal Code provisions also under APC section 153A and 153B. It's punish the act that our causes enmity and it's a hatred between the two groups. And section 295A, it's IPC punishes act that our that intention outright the religion's feeling of a particular person, like our Adipurush recently case. Acha. Yes, sir. And it's also a restriction on the ground that integrity sovereignty of India and public law under national security, defamation, contempt of court, that have restriction. And under Representation Act of People 1951, that section 8 of RPA, it's a prevent a person convicted of illegal use of freedom of speech and expression. Okay, ठीक अच्छी. So let's discuss the जो एटा directly हमें discuss करिए. Okay. तो नेक्स्ट क्लास रे मु जतक मानकर आमे तो देखिले तम आमे केमति लिखुचे तो जो माने नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर जो माने लिखुदिला और रैंक पाई छथि से मानकर आंसर मु देखेबी टोटल गोटे थरा खाली रन थ्रू करिबो. ऑलरेडी हम डिस्कस करिजे तो फास्ट 15 10 20 मिनिट्स मु खाली रन थ्रू करिबी सब क्वेश्चन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हला कि ए सब जोडा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी हला कि सब जहा जहा क्वेश्चन तो सब रो केमति आंसर थी हमर केतडा आंसर जोडा केतडा तो सब हम नुवा क्वेश्चन करछे किंतु सेइथिरे हमर सिमिलर टाइप रे हमें क्वेश्चन देइथिले और समान केन करिथिले हम देखिबो. ओके तो एथिरे जस्ट मु देखि दोछि जे कोन केमति तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने हमें लिखि परिबो जे कोन जे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन माने कोन मींस एक्सप्रेस one's own opinion freely through our speech or writing or painting or any other modes. Okay, India तमरो article 19(1) जोटा कि guaranteed all citizen the rights to freedom of speech and expression ता भीतर तमरो जेमति के मंदाकिनी कहउतले जे all आसीबो freedom of press भी आसीबो freedom of right to silence भी आसीबो electronic media आसीबो सब आसीबो. Okay, 19(2) होची reasonable restriction can be imposed on their right of freedom of speech and speech and हमारा जो expression रे जो थी कि for certain on जो कौन होची purpose जेमति कि हमारा कौन होची ना societal good liberty of expression and opinion with respect to our fear of punishment, self development, free speech
अच्छा यार इम्पोर्टेंस कौन पे तुम्हें कहला जे सेल्फ डेवलपमेंट फ्री स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल डेमोक्रेटिक वैल्यू पब्लिक ओपिनियन ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ensure pluralism okay तापरे reasonable restriction होची interest of the sovereignty and unity of the India तापरे the security of the state example war rebellion against the state friendly relationship with the foreign relation तापरे defamation of offense so hate speech become an exception to the article 1 okay because it is against the sovereignty major reason campaign telling the sovereignty pursuance of a तापरे cinematography ऊपर हमर लिखले कि the rules along with the censorship okay in India stands on the different plane and the validity of censorship commercial violation hurting the religious sentiment prohibit ban screening of movie about controversial topic तो कौन पाई ऐसे लिखिसन जे फिल्म certain piece of work so expression of certain demands a wider boundary of सर हमें ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अप्रोप्रिएशन बिल इंक्लूड कर परबे कि कोडे ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021 हाँ सेटा लिखि परबो कि माने प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन ପାଇଁ कोन रहबा କଥା सेटा लिखि परबो ओके आउ केतडा तमे एग्जांपल तमे ताको दे परबो ओके सो ठीक अछि तो मंदिर तमर हैंड राइटिंग टिके रख एमिति लिखिले एक्चुअली परीक्षा बेले को जे जे न्यू पेपर देखिबो यदि मु भी ठीक से पढ़ी परनी माने जे अन्य माने यदि न पढ़ी परिबे मे भी तम सब पॉइंट्स लिखुछ किंतु रिप्रेजेंटेशन यदि ठीक न रहबो मार्क तुमको माने एवरेज मार्क दे देबे ओके सो ट्राई टू इंप्रूव द हैंड राइटिंग पार्ट ओके तो इथिरे कोन हमर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब लिखि परिबो जे आर्टिकल 19(1) ए रे हमर अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन implies every citizen have expressed his views opinion belief conviction freely by word of mouth writing painting picturing and any other means तम लिखि परिबो ओके तो इथिरे कोन तमर रही परिबो जे सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे freedom of commercial advertisement la propagate one's view as well as others view la freedom of press is freedom of silence is right against tapping the telephonic conversation is okay tapre hate speech consider a reasonable restriction on the speech and expression and hate speech perceived to disparage a person in a group of people based on their social and ethnic group such as race, gender and age. Hate speech constitute a criminal charges under section 153A which is offense and promoting disharmony or feeling of hatred. So therefore freedom of speech does not cover hate speech as it not acceptable in the society and against the definition of freedom of speech and expression is allowed only up to the point of extension. Example तमे देई परिबो freedom of speech does not include the right to incite eminent lawless action. तो example तमे ओटे देइछो make distribute of options materials. तो film रे तमे लिखि परिबो जे due to large audience and are made in many regional languages so they are being censored by the central authority and are subjected to scrutiny
of the court if the content is obscene and has potential to disturb the public order. So in such judgment, say that film contrary to the other form of expression generate more indulge emotion. Okay. Okay, ठीक अछि तो एटा जो कॉमन जेमते हम लिखि जे कि तम तो आगो फास्ट रु लिखिबो कि कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रे अछि तापरे कोन इंपोर्टेंट आउ हेड स्पीच काहे हेड स्पीच तमे गोटे दिटा एग्जांपल तमे देई परिबो हेड स्पीच जेमति कि लीड टू कम्युनल वायलेंस जेमति कि भीमा करोगाम केस एला किबा एबे रिसेंटली जेमति कि माने वायलेंस होची रिलेटेड टू हेड स्पीच जे कि तो सेही रिलेटेड तमे किछि लिखि परिबो एग्जांपल देई परिबो रिसेंटली हेड स्पीच को नहीं कि किसी एमिति हेड स्पीच जो किसी वायलेंस है जी किसी एग्जांपल दे परियो तमे हां आसे देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रो प्रोटेस्ट रे जेएनयू रे हेड स्पीच कर्नाटक केरला रे हेड स्पीच बहुत हेतला सेतोले वायलेंस हेतला आसाम रे एनआरसी पई हेतला आ हिजाब केस को नहीं कि भी एबे बहुत सारा हिंदू मुस्लिम हेड स्पीच बहुत अगेंस्ट रे भी करथले हां हां एमती एग्जांपल तमे देबो ओके तो हां टुकड़े टुकड़े गैंग नाम जो कहथले हां देवव्रत कोन कोन कुआ एग्जांपल सर आजम खान डिस्क्वालिफाई हो जाय रिसेंटली 2019 रो हेड स्पीच पई यूपी रो एमएलए हां हां कहि परियो वेरी गुड ओके प्रज्ञा कोन सर से जो नुपुर शर्मा को केस एटा कहि होबो कि कोडा नुपुर शर्मा सर जो ब्लास्फेमी केस करला नुपुर शर्मा हां एटा भी कहि परियो रिसेंटली एंको बीजेपी रे भी बैन करा जायतिला किछ समय पय सस्पेंड करा जायतिला ओके तो एमती तमे कोन करियो ना एग्जांपल दे परियो ओके ठीक अछि तो एथिरे तमे त जनरल तमे जानिला जे कैरेक्टरिस्टिक्स लेखिबो आमे मेन कहिबार कथा हो जे तमे सब आंसर उडा को सहित किछ गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल दियो सो दैट कि तम आंसर ता समस्त डिफरेंट रहइबो ओके तो सेटा ट्राई करिवो जे जते माने एग्जांपल लो कारण सेटा ही तम आंसर को देखो खाली जदी कैरेक्टरिस्टिक्स लेखिबा हां एटा हमर कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच डिफरेंट फॉर्म रे होची तो हमर लिबर्टी को एटा जो कोन होची पर्सनल डेवलपमेंट लिबर्टी को एटा प्रमोट करूची तो से सब ठीक अछि किंतु ताकू हमर कोन होची ना तमे एटा भी दे परिबो ओके हमर माने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रे तमर सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ हमर जो यूनियन केस भी दे परिबो जो कि गवर्नमेंट गोटे एग्जांपल दे परिबो गोटे फ्रीडम ऑफ स्पीच रो वायोलेशन होतला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच केमती ताकू प्रोटेक्ट करिया पे भी गोटे दिटा एग्जांपल जो अछि ताकू भी दे परिबो ओके एठी मेंशन करि परिबो हाँ के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एटा भी तमे लिख परिबो ओके के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओके तो एथिरे फ्रीडम ऑफ स्पीच रे कोन लिखि परिबो जे राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू एंड ओपिनियन include not only words by mouth but also speech by picture writing also included the right not to speak the right to amaro silence hame कहले तो एटा हमरो आर्टिकल 19 रे अछि ओके तापरे तमर हेड स्पीच एंड एक्सेप्शन जो थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेड स्पीच इज an incitement to the spread hatred against the group of person in terms of race religion ethnic and gender punished under the different section of IPC. It is a ground for reasonable restriction under Article 19. The film तमे देखि परिबो film in India is a form of expression in different other form because movies face pre-censorship from censor board, evaluation and scrutinization of every film by the censor board before release. The recent case Supreme Court held that CBFC grant certification to a movie, there cannot be any kind of obstruction for its exit. तो वर्तमान से जो सर्टिफिकेट ता दबो से अनुसार हमरो ले हबो
ओके बेटर एठी तमे केतडा एग्जांपल तमे दबो जे डिफरेंट प्लेन रे केमिति रहउछि जेमति कि हमें काश्मीर फाइल रहला किबा हमरो उड़ता पंजाब रहला जोथि कि जो मूवी उडा का कंट्रोवर्सी क्रिएट करै छि लोक मान के भितरे ओके ता ऊपर कि नै कि तमे एग्जांपल दे पारे ओके सो ठीक अछि हमें आउ नेक्स्ट क्लास रे जो रेस्ट जोटा अछि 9 रु 12 हमें टोटल कंप्लीट करबा एंड मु अन्य मानकर खाता जो माने लास्ट टाइम लिखितले ताको देखे सर सर हां हां को सर पपाट ज्योग्राफी रो ऑप्शनल क्लास आरंभ होलानी सर हां हेलानी तो सर ऑप्शनल PSIR ऑप्शनल के भी स्टार्ट हो सर ऑप्शनल सुनो कहि दोछि ऑप्शनल लो हमरो टेस्ट सीरीज सब ऑप्शनल लो स्टार्ट होछि इंक्लूडिंग PSR क्लास हमें रेज्यूम करबा चिंतामणि रिहान हमरो एथरो जो मु एकाथरो माने PSR कम पढेबी प्लस हमरो संगे हिमाद्री रहबो तापरे हमरो आउ दि तीन जन रहबे 68 विश्व रहबे तो दि तीन जन हमर रहबे पूरा टीम गोटे हमें करबा ओके तो क्लास विथ टेस्ट सीरीज ए सब हो तो हमरो PSR हो पपाड हो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो सोशियोलॉजी तो ये सब थिरा टेस्ट सीरीज हमरो ए रविवार स्टार्ट हो मु आज हमको पूरा डिटेल टा देबी हां एग्रीकल्चर यस एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री हबो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एथरा नउछंदी आयुसी आउ पंकज आउ रंजित जी रैंक आउ 40 जे की पीएचडी ऑलरेडी करिसंती तो तांकर ओडे ग्रुप रहबो चार जण जो माने की एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रो आंसर राइटिंग देखो खाली हबो आंसर राइटिंग हबो प्लस तार डिस्कशन हबो ओके आउ तुमको गोटे दीटा एंथ्रोपोलॉजी नहीं ओके जो तार गोटे दीटा तमरो खाता पेपर गोटे दीटा टेस्ट रो हबो आ रेस्ट तुमको लिखिया पड़िबो से अनुसार तुमको खाली ट्रेन करा जो केमति लिखबा ओके हां एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कहली ना मु सर साइकोलॉजी गोटे मिनिट साइकोलॉजी नहीं ना साइकोलॉजी मु देखुची अन्य मानकर जो ई छडा को मु जो कहली होम साइंस ए होम साइंस हां मु कहूची देख कोन कोन कहूची हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पबार ओके होम साइंस और साइकोलॉजी ऐसे होम साइंस और सोशियोलॉजी ठीक अछि अरे ओटा सब संडे रो स्टार्ट होबो ई संडे रो स्टार्ट होबो ओके ए संडे रो हम स्टार्ट करियो ओके थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए ग्रेट डे टू ऑल हां आशा जो देखो ना सर सेतबेले जो हैंड रेज हेतला एबे नै ठीक अछि थैंक यू एवरीवन तो हमें पुणी काली सकाळे भेट हबो मु ट्राई करूची ए वीक टा सकाळे करिया पे आ जदी टाइम होउची कारण बहुत पिला देखुची जॉइन करि बर नांती तो विल ट्राई टू अकोमोडेट इन द इवनिंग सर काली क्लास